Hey beautiful girls and hot boys, so this is the entertaining Jhalli. I welcome back to my channel guys. So आज की वीडियो बहुत 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 स्पेशल है मेरे लिए because of two reasons. पहला कि ये मेरी 2020 की पहली वीडियो है. I know it's late, I am late, I'm sorry. But काफ़ी सारी चीज़ें सोच रही थी मैं कि क्या ऐसा कंटेंट डालूँ जो सबको अच्छा लगे, और आगे आने वाले हैं ऐसे कुछ कंटेंट जो आई होप कि आप भी उसमें इंटरेस्टेड हो. एंड सेकेंड दैट अभी कुछ टाइम पहले एक अनाउंसमेंट हुई है इंडिया में दैट फेयरनेस ब्यूटी क्रीम्स और इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को बैन किया जा रहा है, और उस पर 10 लाख का जुर्माना और 2 साल की जेल भी हो रही है अगर ऐसी एड्स देखने को मिली तो. एंड आई वाज सो हैप्पी कि इतने टाइम से बस ये डिबेट का इशू चल रहा था. आज सारे डिबेट कर रहे थे कि everyone is perfect, every skin tone is beautiful, but action नहीं लिया जा रहा था. एंड फाइनली it happened and I was so happy कि चलो ब्यूटी फेयरनेस क्रीम्स का हो गया, ख़त्म हो गया, बहुत पुराने हो गए थे. इट्स 2020 एंड ये बहुत ही अच्छा फ्रेश स्टार्ट हमें मिला. सो ये 2 रीजंस थे मेन. एंड जब मैं ये कर रही थी तो मुझे लगा कि यार इट्स परफेक्ट फॉर समर ऑल्सो, तो इसीलिए ये मैंने एक समर वाइब के साथ ये बनाया है फॉर एवरी वन. एंड इट्स काइंड ऑफ अ डस्की लुक एंड डस्की टैन ब्रॉन्जीनेस आ रहा है, और ये बहुत ही कूल शीक वाइब भी दे रहा है. सो प्लीज़ आप भी ये रिक्रिएट करने की कोशिश करना बिकॉज आई थिंक इट्स वेरी वेरी pretty and it's giving a very cool vibe. And without any further ado, let's begin with the makeup. So firstly, I'm using Maybelline's Master Prime Primer to prime my skin. प्राइमर लगाना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो मेकअप आप लगाने वाले हैं वो आपके पोर्स के अंदर ना चले जाए और फिर उससे ब्रेकआउट्स ना हो जाए. So now I am applying Pond's BB cream with Wet n Wild Photo Focus Foundation in the shade Desert Beige. सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो फाउंडेशन का शेड है वो मेरी स्किन टोन से थोड़ा सा डार्क है. एंड क्योंकि ये फाउंडेशन थोड़ा ज़्यादा ही मैट है, इसीलिए मैंने इसमें पॉन्ड्स बीबी क्रीम मिक्स की है ताकि फेस पे बिल्कुल पैचीनेस ना क्रिएट करे और बहुत ही फ्लॉलेस लुक दे. सो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि मैं एक फ्लैट फाउंडेशन ब्रश के यूज से अपना फाउंडेशन और बीबी क्रीम स्प्रेड कर रही हूँ. बट मैं इस बेस को ब्लेंड एक ब्यूटी स्पॉन्ज के थ्रू करूंगी. आप चाहें तो एक फाउंडेशन ब्रश भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर यूज किया है क्योंकि हर एक की प्रेफरेंस की बात होती है. सो क्योंकि मैं फाउंडेशन और बीबी क्रीम को एज अ कंसीलर यूज कर रही हूँ तो इसीलिए मैं इसे अंडर आईज, आईलिड और अपने नेक पे भी यूज करूंगी ताकि मेरी नेक और मेरा फेस इवन लगे. So now I'm gonna bake my under eyes. I am baking my under eyes with a decent amount of powder. But if you don't like baking, you can also set the whole face with your powder. And now it's time for the eyebrows. Firstly, I'm just combing my eyebrow according to the direction of my hair growth. And then I'm using Maybelline New York Fashion Brow Duo Shaper to just fill in the gaps of my eyebrows. I would suggest you guys to not skip this step at all क्योंकि इससे बहुत ही presentable और अच्छा look आता है. So again, combing up my eyebrow to set everything in place. Because my eyebrows were looking too dark, I decided to set them up with some powder to lighten up the tone. And now I'm just brushing up my eyelids and preparing them for the eyeshadows. I'm using Hilary Rodda's palette, and from that I'm applying a dark maroonish shade to the crease line. You can add as much intensity as you want. Now taking a different brush, I am applying a brownish pinky shade, and with that I'm just blending up the previous eyeshadow. So before applying any other eyeshadow, I decided to moisturize my lips using Nivea Lip Balm. And now I'm taking a bronzy goldenish shade from the Maybelline's New York The Rock Nudes palette and applying it on the center of the eyelid. So because I was not satisfied with this amount of pigment, so I decided to dip that brush into some water to get pigment payoff. You can also use a setting spray instead of water to get pigment payoff, and trust me guys, it really works.
Now I'm taking a nudish shimmery shade and applying it in the inner corner of the eyes to brighten it up. Don't forget to apply it on the brow bone too. And now it's time to do our lower lash line. And for that I'm applying a pinkish brownish shade to the lower lash line. And next I'm applying a dark brown shade to add some more color. And now I'm using Lakme Insta Liner. So as you all can see that this is a liquid eyeliner, so I thought to make a thin wing eyeliner, but of course, like always, it ended up being a big wing eyeliner. Making a wing eyeliner can take too much of your time, but you know na, baby, it's worth it. And ta-da! And as you can see, the liner part is also done, and now it's time for mascara. And for that, I'm using Maybelline New York the Hyper Curl Waterproof Mascara in both upper and lower eyelashes. And I'm just quickly dusting off all the powder that have been on my face for a quite long time now. And then using a very dark contouring shade from NARS contouring palette and applying it on the sides of my cheeks. As you guys know that it's a tan bronzy look, so you'll of course have to go a bit overboard with your contouring. Also, don't forget to contour your jawline, nose and forehead to give a very sharp and edgy look. So after finishing up your cream contouring, it's time for the powder one, and for that I'm using Wet n Wild Mega Glow Contouring Palette. So this time I'm not gonna contour much because I've already done contouring, so I'm just applying a little bit on every area that I've contoured. And with the same palette, I'm just taking the lightest shade and just setting up my jawline and under eyes. And now it's time for blush. I'm using this blusher from Hilary Rora's palette only, and this is a completely optional step. I'm applying it a little bit on my nose too because it really looks very cute. And now it's time for the highlighter, and for that I'm using Swiss Beauty Baked Blusher and Highlighter. I'm applying it on my cheekbones and nose to give it a very shiny look. And finally, it's time for my favorite part, the lipstick, and for that I'm using L18 Colourpop's matte lipstick in the shade Berry Dance. I absolutely loved this color, but you can also go for a nude lipstick. So because I wanted to have glossy lips, I decided to go for Nivea's lip balm to give it a bit shine. It's night time, so I'm not using a setting spray because I just have to go to sleep now, but you should use it. So that's it for today, guys. Thank you so much for watching. अभी मैं कैसी लग रही हूँ? मैंने जो आपको बताया था लग रहा है वैसा? ब्राउन लग रही हूँ? डस्की लग रही हूँ? टैन लग रही हूँ? थोड़ी लग रही है. थोड़ी लग रही हूँ? काफी लग रही हूँ. मिशन accomplished, guys. ऑन अ वीडियो. ठीक है? हाँ. So that's it for today, guys. Thank you so much for watching, and if you like this video, please give it a big fat thumbs up, and don't forget to tell me in the comment section below कि आपको ये look कैसा लगा and आपने enjoy किया या नहीं, या आप ये recreate करोगे या नहीं, ये भी बताना ज़रूर. For me, it's perfect for summer tan makeup look, and
ये कूल शीक वाइब भी दे रहा है, सो मुझे बहुत पसंद आया। मैंने आई शेडो और लिपस्टिक उस शेड में लगाई है जिस शेड का मैंने क्लोथ पहना था। सो अगर आपने ऑरेंजिश पहना है तो आप थोड़ा ब्रिक रेड में लगा सकते हो लिपस्टिक, या ऐसे कुछ आप एक्सपेरिमेंट जरूर कर सकते हो। बट फॉर मी आई थिंक दिस लुक्स मैचिंग विद माई आउटफिट टू, सो दैट्स वाई मैंने ये थोड़ा किया कोऑर्डिनेट करने के लिए। बाकी डोंट फॉरगेट टू शेयर इट टू एज मेनी पीपल एज यू कैन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एज वेल फॉर मोर वीडियोज़। एंड मैंने बहुत सारी चीज़ें सोच रखी है फ्यूचर वीडियोस के लिए, एंड मैं बताना नहीं चाहती, सो इट्स अ सरप्राइज। सो प्लीज ट्यून इन एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब, नहीं, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक, नहीं, डोंट फॉरगेट टू हिट द रिंग बटन बिसाइड द सब्सक्राइब बटन टू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई एम ऑन यूट्यूब, सो दैट जब भी मैं अब जल्दी जल्दी वीडियोज अपलोड करूँ तो आपको ज़रूर मिल जाए वीडियोज़, क्योंकि बहुत बार नहीं मिलती। And yeah, this almost wraps up the video. So stay tuned, guys, for my next video. And peace, and just do well. Bye.